Hindenburg report drops another bombshell. Let's know it in detail. It first tweeted on 10 August 2024 that something big is happening in India. लोगों ने उसी टाइम पर स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि अब अदानी के बाद कौन, रिलायंस या कौन से बिग शॉक। लेकिन उसी शाम को उन्होंने दोबारा ट्वीट किया और बोला कि विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट रिवील सेबी चेयरपर्सन having stake in obscure offshore entities used in Adani money siphoning scandal. उन्होंने लिंक किया है सेबी की चेयरपर्सन को अदानी के फंड से. Now let's go in detail and understand what is SEBI. SEBI is Securities and Exchange Board of India, जो मार्केट वॉचडॉग है, और हिंडनबर्ग ने क्लेम किया है कि उन्हीं के चीफ ऑपोजिट कर रहे हैं and is hiding alleged vested interest. Now, who is the chairperson? Madhavi Buch is the chairperson of SEBI. उन्होंने MBA किया है IIM अहमदाबाद से and she joined SEBI in 2017 as a full-time member at regulator. In 2022, she was promoted as the chairperson. Now, let's understand what is Hindenburg and what is their modus operandi. Hindenburg एक मार्केट रिसर्च कंपनी है यूएस की, और इनका modus operandi है that they dig in big companies, find their corporate malpractices and then short sell their shares. When I'm saying short sell their shares, I mean they make bets on their shares so that they can fall and Hindenburg can make money. And after this, they make their findings public. Now, what is Hindenburg claiming? हिंडनबर्ग क्लेम कर रहा है कि माधवी बुच एंड हर हस्बैंड इन्वेस्टेड 8,72,762.25 USD in IPE Plus Fund in Mauritius in 2015. 2 साल बाद माधवी बुच ज्वाइन करती है सेबी और फिर उनके हस्बैंड गॉट द सोल कंट्रोल ऑफ द स्टेक एज इन्फॉर्म्ड. हर हस्बैंड वाज हैंडलिंग द अकाउंट on her own. Madhavi Buch has denied all the allegations. Now, is investing in foreign funds illegal? The fund that is in Mauritius is linked to Adani's case, which it uses to manipulate stock market. Now, let's connect the dots and understand. SEBI investigate कर रहा है अदानी को for the fund that it has in Mauritius, और SEBI की ही चेयरपर्सन ने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है उसी फंड में. Now, the problem is that Madhavi Buch had alleged interest in the same fund which it is investigating. This is a classic example of conflict of interest. What's the reaction? Opposition चाहता है माधवी बुच रिजाइन कर दे या फिर उनको फायर कर दिया जाए और एक joint parliamentary probe on Adani case. Now, you people tell me in the comment section what is your opinion about this.